हेलो स्टूडेंट्स, आज एक टॉपिक के ऊपर है, वो है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। इसमें 2022 का पेपर मैं सॉल्व करने वाला हूँ। सॉरी, 2022 का ही पेपर सॉल्व करने वाले हैं। एंड इसमें लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से पेचीदे टाइप के होते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत काम करेंगे। सो लेट्स सी दिस इज 22। तो पहला वाला जो सवाल है थोड़ा बहुत आइगन वैल्यू के ऊपर का सवाल है। उसमें क्या दिया है, एक सिंपल सा मैट्रिक्स है ए और x1 x2 x3 इज आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस। अगर ए सेटिस्फाइज दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस मॉड हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं लैम्डा इक्वल टू आइगन वैल्यू है इसका। ठीक है, तो आइगन वैल्यू हो गया तो 1 माइनस लैम्डा। कैलकुलेशन की तरफ इसमें आगे बढ़ेंगे। सो ये माइनस लैम्डा -1 2 -1 0 minus lambda 1 2 1 1 minus lambda. ओके, सो दिस इज इक्वल टू 0। तो इसको फुल कैलकुलेशन करते हैं। 1 माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस लैम्डा माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा। ये है, इसका पूरा कैलकुलेशन मेरा किया हुआ है। सो अगर पूरा इसको ख़त्म करेंगे कैलकुलेशन को, तो यहाँ से लैम्डा का एक रिलेटेड इक्वेशन आएगा जो कि है 1 माइनस लैम्डा कॉमन लेकर लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा का एक वैल्यू तो 1 आ गया, और दूसरा लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा का वैल्यूज आएगा -2 और 3, और यहाँ से आ जाएगा 1। सो लैम्डा का टोटल 3 वैल्यूज है। ओके, स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू फिर -2 है, तो उसके हिसाब से ax माइनस 2x इसका फॉर्मेशन होगा इक्वल टू 0। सो a माइनस 2 यहाँ पर अगर ले लिया, सो दैट इज इंटू एक्स इक्वल टू 0। सो 3 माइनस 1 2 1 माइनस 2 1 2 1 3 this thing, this is also equal to 0. So finally इसको अगर इक्वेशन में डाल देंगे, सो 3x1 minus x2 plus 2x3 equal to 0, this equal to, and minus x1 plus 2x2 plus x3 equal to 0. So multiplied by 2, पूरा कैलकुलेशन के बाद आएगा x1 and x2 x3। ये तीन अगर सेम आ गया, सो तीनों को ऐसे ऐड करके लिख देंगे। सो 3x1 इक्वल टू 1, x1 इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ओके, तो वो भी वही है, वो भी वही है। सो मॉड ऑफ दिस वैल्यू इज 1/√3। 3 टाइम्स ऐसे लिख सकते हैं, 1/√3 प्लस 1/√3 प्लस 1/√3। सो दिस इज 3/√3, √3 1.732। नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ेंगे। 55, लेट x be a random variable with probability density function a and b are real constant p x greater than equal to 2 2/3। एक्सपेक्टेशन ऑफ x का वैल्यू निकालो। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज
0 to 3. So x into fx dx, so 0 to 3, so x square plus b. Comma x square by 3 plus bx 0 to 3 is equal to 1. So 3b equal to 1. Similarly, this is equal to 2 by 3. This is equal to 1 by 3. That is equal to 1 by 3. So 3a plus b, so 8a plus 6b after putting the values equal to 1. Another one, solving the two equations we get a equal to 1 by 10 और b आ जाएगा 5 by 6. तो तब fx क्या आएगा? x square by 10 plus 1 by 30. This is 1 by 30. अब expectation of x क्या आएगा? 0 to 3 x into x square by 10 1 by 30 dx. So this is 1 by 10 x 4 by 4 0 to 3 1 by 30 x square by 2 0 to 3. So 1 by 10 81 by 4 1 by 30 9 by 2. So 81 by 40 3 by 20. So 82 by 7 here by 40. Next, vaccine के ऊपर समय, a vaccine when it is administered by an individual, the product this produces no side effects with the probability 4 by 5 and mild side effects with the probability of 4 by 5. Now and 2 by 5 and severe side effects with 1 by 15. Assume that the development of the side effects independent of the individual. Vaccine administered to 1000 randomly selected. x1 denote the number of individuals who develop mild side effects and this, so x1 plus x2 का value निकालना है. So p1 क्या है यहाँ पर? Is the x1 equal to number of individuals who have a mild side effect होने का probability and this is for the x2 with severe side effect. ठीक है, and p3 equal to x3 no side effect. So x1 plus x2 plus x3 equal to 1000. Now this probabilistic evaluation is p1 x1 CV of x1 plus x2 is 1000 minus x3. So coefficient of variation क्या है? Sigma by x bar 200 ये आ गया 0.63. अब x1 फॉलो करता है एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 1000 p1, x2 भी फॉलो करता है एक बाइनोमियल 1000 p2, x3 भी बाइनोमियल 1000 p3. So n minus x1 x3 follows a binomial
P3. Expectation of x1 plus x2 is by 1 by 5, so 200. तो वेरिएंस हो गया 1000 into 1 by 5 into 4 by 5. That is 160. CV is 0.63. So this is done. That's the answer. Let X be a sequence of independent and identically distributed by a uniform distribution yn equal to n into minimum of this value है. अगर yn convergent to y in this distribution, then the median of y equal to what? Okay, so limit of n tends to infinity, f of yn of y equal to f of y of y. So f of 1 by n of y is probability of yn less than equal to y. So probability of n into minimum of x1 x2 dot 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 xn less than equal to y, and that is less than equal to probability of minimum of xn less than equal to y by n. Now f of 1 by n of y is 1 minus p into minimum of x1 x2 xn less than equal to y by n. So 1 minus phi of p of xi greater than equal to y by n xi y by n. This thing. लिमिटिंग वैल्यू लेंगे उसके बाद लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f of y by n by y, तो यहाँ से ये भी आ जाएगा लिमिट ऑफ y टेंड्स टू दिस 1 माइनस y by n, और ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस y by n 1 माइनस e to the power minus y. So ये क्या है? This is the CDF of the exponential with the parameter equal to 1, e to the power minus y, y equal to exponential distribution with respect to some median of y equal to log 2. Is the answer.